welcome you back to Creative Anand. आमे आशा करूछु एसएसबी टीजीटी हो बा ओएवीएस हो तार आपण मानकर प्रिपरेशन बहुत भले से चलथिबो। आज रो एही क्लास रे आमे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करिबा ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सह किछि एक्स्ट्रा मध्ये आमे जानिबा को करिबा फ्रॉम ईच ऑप्शन। आपण माने मेसेज करी मते जणाई परिबे जे आपण मानकु ऑडियो वीडियो क्लियर अछि कि। शीघ्र शीघ्र मेसेज करी जणाई दियंतु। एवं शीघ्र शीघ्र अन्य माने मते जॉइन करी गले आमे आरंभ करिबा आज हमर एमसीक्यू क्लासेस। अच्छा ठीक अच्छी कौन से प्रॉब्लम नहीं। आई होप जदि भी आपण माने कहीं लेट जॉइन करेंगे से माने परे वीडियो को मते देखि देबे किछ असुविधा नहीं। चलतु आरंभ करिबा फर्स्ट क्वेश्चन। Which sector of economy, which sector of Indian economy contributes largest to the gross national product? First आमको बुझिबा को पड़िबो what is gross national product। प्रथमे चलंतु बुझिबा gross national product कोन। आई एम श्योर आपण समस्ते ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बा जीएनपी जानिथिबे। जीएनपी कोन? जेते बेले आमे जीडीपी सह इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करि दो। जीडीपी सह इनकम फ्रॉम अब्रॉड दीटा जाक मिसे दो आमको मिल जाए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वर्तमान आपण भाबिबे ताहले ए जीडीपी कोन? जीडीपी आज्ञा हेउची हमर इंडिया रा टेरिटरी भितरे इंडिया बाउंड्री भितरे जेते मध्य सब फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होची से होची तार वैल्यू होची हमर जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी रा फुल फॉर्म होची ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एडेड क्रिएटेड it could be the production of goods and services in country during a given period. It could be one period or it could be whatever the census is made to measure। जीडीपी हेउची गोटे वैल्यू जोटा कि हमें कहि परिबा फाइनल प्रोडक्ट एवं सही फाइनल प्रोडक्ट जो वैल्यू हमर बाहर करा होची इंडिया रो ताहा सह इनकम फ्रॉम अब्रॉड अर्थात हमर इनकम कोन कोन इनकम होची अब्रॉड रो कोन कोन इनकम होची। आमे अब्रॉड रो ग्रांट करूचे जो ग्रांट देई थाउचे अन्य कंट्रीज मानन को सेथिरो हमको जहा इंटरेस्ट मिलुची। आमे इन्वेस्टमेंट करूचे सेथिरो हमको किछि प्रॉफिट मिलुची। इन्वेस्टमेंट कोठी करा जाछि अन्य कंट्री रे। ठीक सही परी आउ गोटे कोन अछि जेपरी आमे देखिबा इंडिया रे बाहर कंट्रीज रो किछि लोको आसी इंडिया रे काम करंती जॉब करंती बिजनेस करंती से माने इंडियन करेंसी अर्न करंती। ठीक सही परी इंडियंस बहुत सारा इंडियंस अछंती जो माने यूएसए इंग्लैंड बा अदर कंट्रीज मानकरे जाई मध्य श्रीलंका अदर कंट्रीज मानकरे जाई मध्य जॉब करंती एवं सेठू से माने तांका करेंसी को नै आसंती। तो ए सब होछि हमर आमे कहि परिबा इनकम फ्रॉम अब्रॉड जहाँ
अन्य कंट्री रो आम कंट्री को एज ए सैलरी एज ए प्रॉफिट आसु लोक मानकर बा इंडियन गवर्नमेंट अदर कंट्री को जो ग्रांट दे थाए ताहार इंटरेस्ट आसु किंबा फॉरेन कंट्रीज जो इन्वेस्टमेंट करा जाय थाए ताहार प्रॉफिट आसु ए सब को नहीं हमर कोन बाहर करा हुए इनकम फ्रॉम अब्रॉड एथरो नेट जहा आसी थाए इनकम फ्रॉम अब्रॉड एवं जीएनपी हमर बाहर करा जाय मन रखो जीएनपी कोन बाहर करा जाय जीएनपी किपरि बाहर करा जाय ना जीडीपी अपन लिखि परिबे द फॉर्मूला ऑफ जीएनपी इज जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओके चलो वर्तमान जीएनपी कौन आम बुझीगले तो आमर क्वेश्चन होची विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एठी ऑप्शन रची प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आपण माने भाबिबे जेहेतु प्राइमरी सेक्टर माने एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत अच्छी आमर इंडिया रे बहुत अनेक लोक एग्रीकल्चरल सेक्टर रे काम करते तार अर्थ अधिक इनकम आमर एग्रीकल्चरल सेक्टर ही आसुथिबो ताहले जदि आपण एमती भाबिबे ताहले आंसर भूल यस आम कंट्री रो बहुत जन लोक मोर देन हाफ मोर देन 60% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर बट सेठू रिटर्न आसेनी तेणु आमर जीएनपी रे सी कंट्रीब्यूट करि पारेनी अधिक कंट्रीब्यूट करि पारेनी जदि हमें चारटा जाक ऑप्शन देखिबा सेतिरु राइट आंसर होचे टर्शियरी सेक्टर contributes in a largest proportion to our gross national product and this sector is also known as service sector. You can write it. सर्विस सेक्टर मध्य याको कुहा जाए ठीक अच्छे सर्विस सेक्टर ताहले व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर रे हमर कोन कोन इंक्लूड आसी पारे प्राइमरी सेक्टर इट कुड बी एग्रीकल्चर हमर आसी पारे फॉरेस्ट्री आसी पारे एनिमल हस्बेंड्री आसी पारे फिशिंग आसी पारे पोल्ट्री फार्मिंग आसी पारे माइनिंग आसी पारे ओके गुट्टे कथा आपण मन रखिबे प्राइमरी सेक्टर बा एग्रीकल्चरल सेक्टर रे से सब आसीबो जेउथरे कि नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करा जाय पारुछि एंड व्हाट इंक्लूडेड और व्हाट अंडर सेकेंडरी सेक्टर भितर से सब किछि आसे जेउथरे कि मैन्युफैक्चरिंग हुए and industrial activities. मु गोटे क्वेश्चन देखी थी जो पचरा जाइथिला सेकेंडरी सेक्टर केवल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हुए सेमिति जदि पचारछि ताहले आपण आंसर देबेनी सेकेंडरी सेक्टर कारण मैन्युफैक्चरिंग होछि तार मेन आंसर जते बेले कोनोसी गोटे प्रोडक्ट फाइनली मैन्युफैक्चर हे फाइनल प्रोडक्ट हे आसी जिवो सी कौन जीवा आमर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट सेकेंडरी सेक्टर रे आमर से सब जीवा जे कि अंडर प्रोसेस मध्ये चलुथिबो मैन्युफैक्चरिंग होची सेकेंडरी सेक्टर ओके तो आमर एहर राइट आंसर होची ऑप्शन सी टर्शियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर सेकंड क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर okay the most appropriate measure of country's economic growth this option A gross domestic product net domestic product net national product or option D per capita real income question is the most appropriate measure of country's economic growth गोटे कंट्री रो इकोनॉमिक ग्रोथ होउची बोली जानिबा पई काहाकू मेजर रूपे निहा जाय सबठु अधिक अप्रोप्रिएट मेजर कोन हेबो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जदि हमर हाई हेउची हां नो डाउट हमर इकोनॉमिक ग्रोथ होउची नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाई हेले मध्य इकोनॉमिक ग्रोथ होउची नेट नेशनल प्रोडक्ट हाई हेले मध्य हमर ग्रोथ होउची बट सबठु अप्रोप्रिएट सेते बेले हबो जेते बेले आम कंट्री रो ईच पर्सन रो पर कैपिटल रियल इनकम बढ़िबो
पर कैपिटल रियल इनकम जते बेले बढ़िबो सेते बेले ही आमे जानिबा ये होची गोटे एप्रोप्रिएट मेजर एवं या द्वारा ट्रू मेजरमेंट बा ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन जड़ा पड़िबो द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स पर कैपिटा रियल इनकम ओके पर कैपिटा रियल इनकम कौन पर कैपिटा रियल इनकम देखो फॉर एग्जांपल गोटे घरे मु आज कहूँ गोटे कंट्री को गोटे घर नहीं कि आमे करबा एही घर रे 3 जण बा 4 जण रहउछंती ठीक अछि एही पर्सन आमे कहि परिबा ए बी सी डी 4 जण पर्सन रहउछंती पर्सन ए मंथली 1000 रुपीस इनकम करूची पर्सन बी 2000 रुपीस इनकम करची पर्सन सी 1500 रुपीस इनकम करची बट पर्सन डी 10,000 रुपीस इनकम करची you can see what is the difference between all the family members एठी गुट्टे पर्सन ही अच्छी पर्सन डी जहार की इनकम होची 10,000 ताहले एठी इक्वालिटी बा आमे कहि परिबानी जे एही फैमिली रो प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ होची पूरा फैमिली रो जदि आमे ऐड करिबा हां ग्रोथ हे थाई पारे बट पर कैपिटा एठी ठीक नाही बुझी पाले तो इंडिया रो प्रकृत ग्रोथ बा इकोनॉमिक ग्रोथ केते बेले होची हम जानि परिबा तबे चारोटी जाकर भितरे मेजर डिफरेंसेस नथिबो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा राइट आंसर हमें जानिले ऑप्शन डी पर कैपिटा रियल इनकम क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू occupational structure कौन number of workers living in a country size of the working population in the industry गोटे कंट्री रे नंबर ऑफ वर्किंग केते रहउचंदी माने जदी इंडिया रे इंडिया रा पॉपुलेशन होची 1000 जदी इंडिया रा पॉपुलेशन होची 1000 ताहाले एही 1000 भितरु केते जण वर्किंग पॉपुलेशन अछंदी ठीक अच्छे बी साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द इंडस्ट्री रे साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन कौन अच्छे ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट ऑक्युपेशन वर्किंग अलग अलग ऑक्युपेशन रे वर्किंग पॉपुलेशन केमिति अच्छी नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्युपेशन इन द इकोनॉमी occupational structure what is occupational structure refers to distribution of working force among the different occupation एठी आसला गोटे वर्ड वर्किंग फोर्स what is working force होची गोटे कंट्री रे केते जण लोक काम करी इनकम करि पारुछंती and occupational structure is also classified on the basis of the skill level and economic status. So here the answer is option C distribution of working population among different occupation. माने नियंतु फॉर एग्जांपल कहि परिबा मेठी मु आपन गोटे एग्जांपल दोछि मैक्सिमम आपण माने जानि छंती टीचिंग समस्त भाबंती जे टीचिंग लेवल रे सबुठु अधिक कंपटीशन अछि जति गोटे कंट्री रे आम इंडिया रे टोटल 1000 लोक अछंती पॉपुलेशन 1000 अछि जोटा कि इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट तथापि धरि नियंतु फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग 1000 टोटल पॉपुलेशन अछि एही टोटल पॉपुलेशन रो 700 केवल टीचिंग लाइन रे आसीबा को चाहिबे 50 जण केवल इंजीनियरिंग लाइन रे आसीबा को चाहिबे 10% केवल परसेंट नुह 10% केवल डॉक्टर लाइन रे मेडिकल लाइन रे आसीबा को चाहिबे तेबे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक हेई परिबो नाही गोटे कंट्री रो तो हमको एटा भी देखिबार अछि जे डिफरेंट ऑक्युपेशन रे वर्किंग पॉपुलेशन ठीक से अछि ना नाही एटा होछि ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 मेन फीचर ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्लान पीरियड को प्लान पीरियड समय रे स्ट्रक्चरल चेंज रो इंडियन इकोनॉमी रो जो स्ट्रक्चरल चेंज ता
को प्लान पीरियड रे भल भाव में एक्सप्लेन कर देछि। The Indian economy has been several structural changes during plan periods, but major one is shift from agrarian to service based economy. सबुठु इम्पोर्टेंट चेंज होची जो शिफ्ट करने को चेष्टा कले एग्रीकल्चरल सेक्टर टू प्राय सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। अधिक रु अधिक चेष्टा करा जायछि किपरि सर्विस सेक्टर को अधिक प्राधान्य देबा पाई, कारण सर्विस सेक्टर रु अधिक रिटर्न मिले। ऑप्शन ए सब्सटेंशियल increase in share of service sector in GDP, emergence of industrial sector as the highest contributing sector in GDP, emerging the industrial sector as the highest employment generation sector. Option D none of the above. आमे कौन कहले सब्सटेंशियल इंक्रीज इन शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर। जो प्लान पीरियड गुड़िक आम इंडिया रे घटिला से भितरु जिते बेले जदि आमे कहिबा एग्रीकल्चर ठू सर्विस सेक्टर को आसीबा फोकस करिबा एग्रीकल्चर सेक्टर अपेक्षा प्राइमरी सेक्टर अपेक्षा टर्शियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर को अधिक फोकस करिबा एटा ही इंडिया रा इकोनॉमी रा टर्निंग पॉइंट थिला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा which of the following okay let me setting the frame first. Which one of the following is not the feature of Indian economy as an underdeveloped economy? India रा underdeveloped economy अनुसार कोटा सपोर्ट करूनी को फीचर टा को सपोर्ट करूनी। Inequality in income and wealth distribution। अरे भाई आमर स्टेट रे आम कंट्री रे आम नेशन रे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ भरी भरी की रही छी ता माने ये तो सपोर्ट करूची। हाँ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रो अर्थ होची जोठी कि इनकम और वेल्थ रो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हेतिबो। ऑप्शन बी वेरी हाई पर कैपिटा इनकम मिसी जाइछि पर कैपिटा और इनकम मिस जाइछि ठीक सेपरेट ये हबो कैपिटा पर स्पेस रे कि इनकम रहबो। जदी पर कैपिटा इनकम हाई हैला ता कौन हम से गोटे डेभलप्ड कंट्री से जीवो ना डेभलपिंग रे रहिबो ना अंडर डेभलप्ड रहि जीवो तेणु ऑप्शन बी सपोर्ट करूनी अंडर डेभलप्ड कंट्री पे। ऑप्शन सी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट कंट्री। अंडर एम्प्लॉयमेंट कंट्री रे अनएम्प्लॉयमेंट रो प्रॉब्लम थाए जहा कि हमर इंडिया रे भरी रही छी। जानि छंती स्वाधीनता रो एते वर्ष परे मध्य अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बा बेरोजगार हमर इंडिया ता सहित आम स्टेट ओडिशा को खाइबा को बसलानी ता माने ये मध्य सपोर्ट करूची अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रो गोटे फीचर। लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ जो कंट्री अंडर डेवलप्ड थाए बा डेवलपिंग रे थाए तार सेविंग्स भी कम रुहे इन्वेस्टमेंट भी कम रुहे एवं तार प्रॉफिट रिटर्न ए सब भी कम ही रुहे तेणु यार राइट आंसर कौन है जीवो ऑप्शन बी वेरी हाई per capita income। okay very high per capita income। next 6 number question which one of the following is not included in secondary sector from the standpoint of sources of national income? Which one of the following is not included in secondary sector from the point of sources of national income? Agriculture, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन और वाटर सप्लाई। एग्रीकल्चर से पचारची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर कोटा हमर सेकेंडरी सेक्टर रे इंक्लूड होउनी। देखंतु इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर माने कोन व्हिच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर सेकेंडरी सेक्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। इट कुड बी फूड इंडस्ट्री। भावतु सेकेंडरी सेक्टर रे कौन कौन जाई पारे कौन जाई पारे फूड इंडस्ट्री जाई पारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जाई पारे कंस्ट्रक्शन जाई पारे केमिकल इंडस्ट्री जाई पारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जाई पारे मींस इंडस्ट्री तो जीव
कंस्ट्रक्शन तो जीवो वाटर सप्लाई पाई मध्य ताहा पे तो किछि कंस्ट्रक्शन चलिबो टैंक क्रिएट हबो पाइपलाइंस कनेक्शन हबो ए सब भी तो हबो किंतु कोन हेबोनी एग्रीकल्चर हेबोनी कारण एग्रीकल्चर इज प्योरली अंडर प्राइमरी सेक्टर. All right, so here the answer is option A, agriculture. 7 number question. Which of the following is not a characteristic or trend in national income and per capita national income of India? Increase in national income and per capita national income. Option B. Okay, let's understand the question first. Which of the following is not a characteristic or trend in national income and per capita national income of India? Kouta per capita national income kimba national income of India ra characteristics no. Increase in national income and per capita national income. नेशनल इनकम इंक्रीज हेले पर कैपिटा इंक्रीज हे बेटा कंप्लीटली ट्रू नुह बट हाँ ऑन द साइड बाय साइड आम देखा जदि ताहले नेशनल इनकम इंक्रीज होची ता माने कहार पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज होची ही. ऑप्शन बी लो रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा नेशनल इनकम. ऑप्शन सी इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ऑप्शन डी टू मच डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्री. किन क्वेश्चन कौन कहूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स आमर ऑप्शन देला टू मच डिपेंडेंस ऑन इंडस्ट्री ऊपर डिपेंड कर तो भल साइन कि आम पॉजिटिव आड़ को जीवा जदि कह जाता टू मच डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर ताहा भूल होता किंतु ये तो ठीक कथा कहूँ हाँ कि ना ये तो ठीक ही बट ये कौन विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक सब तो ये प्रॉब्लम रे जीव ना तेणु यार राइट आंसर कौन हो ऑप्शन डी टू मच इंडिपेंडेंस इन ऑन इंडस्ट्री. ये तार प्लस पॉइंट ये तार नेगेटिव पॉइंट नुह. क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following is not the driving force of the service sector in India? Software and IT, banking, agriculture, insurance. Which one of the following is not the driving force of the service sector in India? Okay, एतिक भितर जो चार्टा ऑप्शन दिया जाइए सर्विस सेक्टर रे कोडा जाउनी. सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विस सेक्टर रे जाउची, बैंकिंग मध्य सर्विस सेक्टर रे जाउची, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर रे जाउची. सर्विस सेक्टर रे अलगा ना हमें कोन देखितले टर्शियरी सेक्टर तेणु मन रखिबे सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. इंश्योरेंस मध्य हमर सर्विस सेक्टर रे जाउची तेणु यार राइट आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन सी एग्रीकल्चर. नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन. मेन वर्कर्स आर दोज हु हार्ड वर्क फॉर. मेन वर्कर कहा को कह जाए जेकोसी गोटे सेक्टर रो मेन वर्कर आमे कहा को कहबा जे कि एटलिस्ट गोटे वर्ष रे 180 डे काम करे. गोटे वर्ष कौन 365 डेज आउट ऑफ 365 डेज जी 80 डेज काम करे ताकू आमे कहबा कि ना जी 200 रु अधिक दिन काम करे ताकू कहबा ना जी कि मोर देन 300 बा आमे एटा देखंतु आमे जदि 365 डेज को भी न नबा गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे फैक्ट्री रो तार जतिक दिन वर्किंग डे अच्छी एटलिस्ट जी कि 180 डे काम करे ताकू आमे मेन वर्कर नबा ना मोर देन 200 डेज जी करछु ताकू मेन वर्कर नबा ना मोर देन 300 डेज जी करछु ताकू नबा ना जी 365 डे करछु ताकू नबा. ओके, लेट अंडरस्टैंड दिस. According to 2001 census, the number of main workers or the number of days recognized for the main workers is 183 actually, which is not even mentioned in the option. So we have to go with 180, which is near to 183. Okay, I hope you all understand. 2001 सेंसस अनुसार जी कि 183 दिन काम करुछि which is 31% according to 2001 सेंसस. ओके, जे काम करुछि ताकू आमे मेन वर्कर रे इंक्लूड करिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन 10 नंबर क्वेश्चन. In economics, structural changes of the economy means
In economics, structural changes of the economy. Economics रे आमे structural change काहाकु बोली कहबा. A subsistence economy may be transferred into an manufacturing economy. A regular mixed economy may be liberalized. Both या none. See, in a structural economy, a subsistence economy may be transformed into manufacturing, and also a regulated mixed economy may be liberalized. So here the answer should be option B. Okay, here the answer option A is right, option B is right, so the answer is option C, both. 11 number question. Let's see what the question is about. Which is the most significant feature of the Indian population? Declining birth rate, improvement in the literacy level, the size of its adolescent population, improvement in health conditions. See, this is true that birth rate is declining, but not in a much difference. Okay, आमे कहि परिबा केवल बर्थ रेट कंट्रोल हेछि, डिक्लाइन भी हेइनी, तो एटा नॉर्मली भूल हबो. इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी लेवल एक्सपेक्टेड जतिको रहुछि सतिको तो होउनी. मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर कुहा जाइछि ऑप्शन सी, द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन. आमर जेहेतु इंडियन पॉपुलेशन कथा कुहा जाइछि, आम इंडिया रे एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन संख्या सबुठु अधिक, एवं एटा ही होउछि ताहार सिग्निफिकेंट फीचर. एटा केते जानिछन्ती, आम इंडिया रे जिते भी पॉपुलेशन अछन्ती 1/5 अछि the size of its adolescent population. Improvement in health conditions, no, तार significant feature होउछि the size of adolescent population. Next, 12 number question. What is sex ratio? Try to answer. What is sex ratio? Sex ratio is defined as the number of females per 1000 male. Okay, for a given period of time. It could be 10 years for the census. Number of female for 1000 male, option 1 is right. Option B, number of female per 100 male, 100 nahi 1000. The study of population growth रो study को sex ratio कुहा जाए नहीं. Difference between birth rate and death rate, no. Here the answer is option A. Number of female per 1000 male is known as sex ratio. In a society that has males and females equal in number, the sex ratio is 1:1. जो कंट्री रे जदि एमती कोनोसी कंट्री अछि जोथरे कि फीमेल आउ मेल रो नंबर सेम रहबो, ताल ता रेशियो कोन हे जिवो 1:1. नाउ एठी गोटे प्रश्न आसुची, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? इट्स अकॉर्डिंग टू 2001 census, females, number of females is 943. ओके, जेहेतु एठी सेक्स रेशियो कथा पचरा जाइछि, आमे कोन काउंट करिबा 2011 र सेक्स रेशियो बा सेंस 2011 सेंसस अनुसार सेक्स रेशियो कोन होछि हमर 943 बाय और बाय नहीं कोन कहूछि 1000 मेल, 943 female per 1000 male. But here we also have to consider the previous census before 2011.
What is the sex ratio of 2001 census? 2001 ର census ଅନୁସାରେ, according to 2001 census, what is the sex ratio of India? Think about it. Try to answer. The answer is 933 for 1000 male. See, it केवल 33 रु 43 आमे कहि परिबा गोटे 10 वर्ष भितरे महिला मानक बा झियो मानक संख्या केवल 10टा बढ़ी छी। आमे काहे की 2011 रही नबा? Because this one or 2011 census is our last census. 2011 ପରେ 2021 रे सेंसस हबार थिला, किंतु ड्यू टू कोविड पेंडेमिक ये शिफ्ट हो जाइछि 2024 को। 2024 केते बेले हबो? इलेक्शन ପରେ। 2024 इलेक्शन पर आमर नेक्स्ट सेंसस हबा को जाउछि। जेहेतु 2021 बा 2011 परठू कोनोसी सेंसस जनगणना होई नाही, ओनली बिकॉज ऑफ दैट देयर इज a huge or high chance of questions from 2011 and 2001 also. That's why we have to remember all the specific data about 2001 and 2011 census. तो ये हमको मन रखिया को पड़िबो 2011 जनगणना अनुसार सेक्स रेशियो कोन थिला? 943,000 पुओ मानक पई। 1000 पुओ थिबा बेले 943 झियो थिले, एवं 2001 र जनगणना कहूची 1000 पुओ थिबा बेले 933 जण झियो थिले। तेणु आमर राइट आंसर एटी कौन है? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001? व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001? सी, मु आपनको कौन कही जेहेतु 2021 रो सेंसस होई पारिनी, तेणु आमको 2001 एवं 2011 सेंसस रो सबु किछि मने रखिबा को पड़िबो फॉर आवर एग्जाम। तो 2001 रो डेंसिटी होछि 324 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? कैन एनीवन से व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? Population density is the number of people per unit of area. Number of people per unit of area. See, माने देखो तो एटा होची हमर इंडिया, ठीक अछि? एटा होची इंडिया। इंडिया रे गुडाए स्टेट अछि, सेति भितरु आमे गोटे छोटो स्टेट नै जिबा गोवा। ठीक अछि? छोटो स्टेट नै जिबा गोवा। आउ गोटे जेकोसी गोटे बड़ स्टेट नहीं जिबा आम ओडिशा नहीं जिबा गोवा अपेक्षा। बुझी पारले? तो गोवा रो पर स्क्वायर किलोमीटर अनुसार केते लोक रहउछंती, ओडिशा रो पर स्क्वायर किलोमीटर अनुसार केते लोक रहउछंती। गोटे पर्टिकुलर बा आमे जदी ताठु भी सरल भाषा जदी मु आपनको कहिबी जे मानि नियंतु फॉर एग्जाम्पल मु आपनको कहूची गोवा रो गोटे किलोमीटर भितरे 500 लोक रुहंती। गोटे किलोमीटर भितरे 500 लोक रुहंती। ओडिशा रो गोटे किलोमीटर लोकरे 1000 लोक रुहंती। ता माने ओडिशा रो डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक, ओडिशा रो गोवा रो पॉपुलेशन डेंसिटी कम। गोटे किलोमीटर भितरे गोवा रे 500 लोक रहउछंती। वर्तमान देखंतु गोवा छोट राज्य, ओडिशा बहुत बड़ राज्य, बट आमे जेते बेले गोटे कंपैरिजन करूछे ता माने हमर किछि यूनिट गोटे सेम यूनिट रहबा को पड़िबो जहा माध्यम रे कि आमे कंपैरिजन करिबा। बट अदरवाइज आपण भाबंतु एठी गोटे झियो अछि, एठी गोटे झियो अछि, याको आपण तार हाइट अनुसार कहउछन से झियोडा बहुत भलो, एठी जाको तार पाठ अनुसार कहउछन, तो दीटा जाको तो यूनिट डिफरेंट हे गेला, कौन सी कॉम्बिनेशन ही रहिलानी।
कॉमन फैक्ट जोड़ा को नहीं आपण कंपैरिजन करूचंती तेणु एटी गोटे किलोमीटर भितर जदि 500 लोक रहउचंती ओडिसा जदि गोटे किलोमीटर भितर 1000 लोक रहउचंती ताले ओडिसा रा पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक गोवार कम जदि आमे तार उल्टा देखिबा नहीं जीवा हरियाणा मु रैंडमली कहूची कौन से स्टेट रा डाटा मु दउनी आपनको ठीक अछि हरियाणा नहीं जीवा मु नहीं जीवी आंध्र प्रदेश बा बाइठी मु गोवा ही नहीं जाउची मानि नियंतु एठी गोवा रे एते छोट हे मध्य गोटे किलोमीटर रे तार 500 रहउचंती आंध्रा बड़ स्टेट हे मध्य गोटे किलोमीटर रे तार 100 लोक रहउचंती ताहाले पॉपुलेशन डेंसिटी गहली स्थान क्राउडेड एरिया कोन हैला गोवा तो जेउठी पर स्क्वायर किलोमीटर अनुसार जिते पर्सन रहुथिबे सेटा हेउछि तार डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया or per square kilometer usually transcribed as per square kilometer okay so 2001 अनुसारे what was the population density of India according to 2001 तो 2001 रा अनुसारे density होची 324 तो हमको जानिया को पड़िबो 11 रा आमको जानिया पड़िबो 11 रा व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस एटा भी हमको मन रखिया को पड़िबो जते बेले कि 2001 रे ये 320 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर थिला एटा वर्तमान चेंज होई कोन हे जाई छी 82 पर स्क्वायर किलोमीटर देखो ता माने 2001 रा पॉपुलेशन और 2011 रा पॉपुलेशन आपण भाबतो 2001 मसीहा रे स्क्वायर किलोमीटर रे 324 जण रहुथिले किंतु 2011 मसीहा हेउ 382 हो गले वर्तमान तो आहुरी बाकी अछि 311 रु 324 काउंट करबा को जेते बेले आसीबो डाटा पुणी थरे शॉक हे जिबा को रेडी हे जानतु क्वेश्चन नंबर 14 A large population of children in a population is a result of what? A large proportion of children in a population is a result of गोटे कंट्री रो गोटे पॉपुलेशन तार जिते जण पॉपुलेशन थिले से पॉपुलेशन रे किछि गोटे नंबर ऑफ प्रोपोर्शन रो चिल्ड्रन को हमें कोन बोली कहबा ताको हमें कहबा हाई बर्थ रेट पॉपुलेशन जिते बेले बढ़िबो डेथ रेट होई परिबोनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपण भाबी परिबे किंतु लाइफ कथा आपण केते बेले भाबिबे जिते बेले बर्थ हबो केही जने बर्थ ला परता हमें ताको लाइफ भाबिबा मोर मैरिड कपल्स ता माने कोन केवल जो अधिक विवाहित अछन से माने छुआ जन्म करि चलचंती नो से माने छुआ जन्म करे मध्य प्रश्न तो जन्म रही उठुची तेणु ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन गोटे पॉपुलेशन रे जदि चिल्ड्रन रो प्रपोर्शन बढ़ी बढ़ी जाउची इट इंडिकेट्स टू हाई बर्थ रेट ऑफ दैट कंट्री ओके सो द आंसर इज ऑप्शन ए हाई बर्थ रेट क्वेश्चन नंबर 15 which is the most populous country of the world option A India option B United States option C China option D Russia C एठी confusion create हबो जते बेले ए क्वेश्चन को मु देखिथिली ना मु फर्स्ट कोन कहिथिली जानि छथि मु फर्स्ट कहिथिली इंडिया सीरियसली मु इंडिया कहिथिली काहे कि ना आजि का सिचुएशन जदि हमें देखिबा ताहले इंडिया चाइना को क्रॉस करी मोस्ट पॉपुलस कंट्री होई सारलाणी किंतु सब किसी चले कागज पत्र उपरे फॉर्मल नोटिफिकेशन उपरे तो फॉर्मली डिक्लेयर सेते बेले करा जिवो जेते बेले 2024 सेंसस हेबो किंतु एबे तो 2024 सेंसस हेइनी तेणु जदि हमको क्वेश्चन आसे एग्जाम रे डियर एवरीवन प्लीज रिमेंबर जदि आपनको क्वेश्चन रे आसे अकॉर्डिंग टू 2011
ता माने जेहेतु आमर हेनी से कौन पचार 2011 सेंसस अनुसार ही पचार 2011 सेंसस कहूँ चाइना थिला फर्स्ट एवं इंडिया थिला सेकेंड पोजिशन रे बट रियलिटी इज नाउ इंडिया चाइना को पछरे पकाई आग को बढ़ी गलानी इन केस ऑफ पॉपुलेशन जदि सी फॉर्मली न पचारि पचारिला नॉन फॉर्मल डाटा ताहाले सी हबो इंडिया ओके क्वेश्चन नंबर 16 the number of people in different age group is referred as the number of people in different age group is referred as आमे कौन पढ़िले सेक्स रेशियो कौन कहूची सेक्स रेशियो कहूची नंबर ऑफ फीमेल्स बाय माने पर 1000 मेल मोर बाई ही जाउची सेटा टिके क्षमा करिवे सेक्स रेशियो कहूची कि पर 1000 मेल रे 1000 जन पुओ भितरे केते जन झियो अछन सेटा होची सेक्स रेशियो ता माने डिफरेंट एज ग्रुप रो कथा ही उठुनी एज कंपोजिशन yes the age composition of a population is defined as the number of people in different age groups within a country एज कंपोजिशन होची राइट आंसर कहीं कि एज कंपोजिशन कहूची जे आम गोटे कंट्री रे चाइल्ड आमे कहबानी इन्फांट केते अछि चाइल्ड केते अछि वर्किंग फोर्स केते अछि ओके नॉन वर्किंग फोर्स केते अछि डिपेंडेंट पॉपुलेशन केते अछंती जो माने कि चाइल्ड एवं ओल्ड एज अबव 60 से माने कोन हे गेले डिपेंडेंट पर्सन ऑन वर्किंग फोर्स लेबर फोर्स ए सबू डिफरेंट एज को किए क्लासिफाई करूची एज कंपोजिशन एडोलसेंट पॉपुलेशन तो एडोलसेंट विषय कहबो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर कोन ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर होची जे केते लो टोटल केते पॉपुलेशन अछंती ओके केते पॉपुलेशन ऑक्युपेशन रे काम करछंती माने केते पर्सन वर्किंग अछंती टोटल पॉपुलेशन ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर टोटल केते पॉपुलेशन अछंती गोटे कंट्री रो से भितरे चाइल्ड केते अछंती से भितरे वर्किंग पीपल केते अछंती केते रु केते एज रो पिला माने काम करि परिबे केते परठु काम करू नाहंती तांको परसेंटेज केते सेमानंको कोन कुहा जाय ए सब होची ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर पुनी केउ ऑक्युपेशन रे केते परसेंट लोक अछंती ये होची सब हमर ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर तेडो एहर राइट आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन बी एज कंपोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 17 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन Which factors are responsible for sparse population? Now, what is sparse population? एक extra level रो दे दूची English आमे बुझी पारुने nothing. Sparse population means few people. It means few people. Which of the following factors are responsible for sparse population? बा किछि किछि सेक्टर रे people population रो कमिबार कारण कोन फ्लैट प्लेन्स एंड अब्यूडेंट रेनफॉल किछि जागा रे ठीक अछि किछि जागा रे से पचारची पॉपुलेशन किछिटा जागा रे पॉपुलेशन कम हबार कारण कोन ना फ्लैट प्लेन्स एंड अब्यूडेंट रेनफॉल अधिका एक्सेस वर्षा कारण से लोक माने से जागा छाड़ दउछंती रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट पे छाड़ दउछंती फर्टाइल सॉइल एंड अब्यूडेंट रेनफॉल जदि फर्टाइल सॉइल अछि त कि छाड़िबो नहीं रग्ड टेरेन एंड फेवरेबल क्लाइमेट जदि फेवरेबल क्लाइमेट हला कि काहे कि छाड़िबो जोटा मते ठीक लागुची मु काहे जो कंडीशन क्लाइमेट मो पे ठीक अछि मु काहे सेटा को छाड़िबिनी सेहि परि फर्टाइल सॉइल जदि मिलुची काहे कि छाड़िबोनी तो एठर आंसर कोन होची रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट मिलिबा फल रे ही लोक मानक संख्या सही एरिया रे कमी जे तेन आंसर हबो ऑप्शन बी 18 नंबर In how many years is the official enumeration of population carried out for census? केते वर्ष को थरे जनगणना करा जाय सिंपल आंसर ऑप्शन सी 10 वर्ष अच्छा एथिरे गोटे क्वेश्चन आपण मन रखिबे 10 वर्ष बोली तो कुहा गला 10 वर्ष बोली कुहा गला किंतु सबठु प्रथम माने फर्स्ट सेंसस केबे हेतला फर्स्ट सेंसस हेतला 1800
1881 कहा द्वारा बाय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो कौन थिले वाइस रॉय थिले बाय लॉर्ड मेयो। वाइस रॉय थिले किए थिले लॉर्ड मेयो एवं लॉर्ड मेयो को द्वारा इंडिया रे फर्स्ट सेंसस हेतला 1881 रे। एहर आंसर हेबो ऑप्शन सी 10 इयर्स। Question number 11. Sorry, 19. Very sorry, 19. Which one of the following is an important social indicator to measure to extent of equality between males and females in A? पचारुछि मेल एंड फीमेल रो प्रपोर्शन जो मेजर करा जाउछि ताको कोन कहआ जाउछि। एज कंपोजिशन कहआ जाउनी। एज कंपोजिशन डिफरेंट एज पीपल पई। लिटरेसी रेट केते जण लिटरेट रहिले केते जण इलिटरेट हे गले सेटा बुझाउछि। डेथ रेट पर किछि जण पिला अनुसार डेथ केते जण होउछि तेनो आंसर हेबो ऑप्शन सी सेक्स रेशियो। आमे यहाको डिस्कस करि सरछि भल भाबरे। 20. Name of the union territory have the highest density of population. highest density of population किए मुझे देखंतु आंसर आपण मानक पई लिखि देछि। हाईएस्ट होछि दिल्ली। ऑप्शन बी होछि आपनकर राइट आंसर। कोन पचरछि यूनियन टेरिटरी। चलंतु गोटे डाटा आपण माने रखि देबे। डाटा कहूछि बाकी सब किछि भूल जांतु। डाटा कोन कहूछि देखंतु। गोटे पटे आमे नै जिबा स्टेट, गोटे पटे आमे नै जिबा यूटीज यूनियन टेरिटरी। गोटे नै जिबा आमे हाई, गोटे नै जिबा लो, सॉरी लो। किंतु आपण भाबंतु आमे लेखुचे कहा विषय रे पढिबा को जाउछे। आमे जाउछे पढिबा को पॉपुलेशन डेंसिटी, नॉट अबाउट पॉपुलेशन, इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक अछि। को स्टेट अछि जहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबुठु अधिका। पॉपुलेशन डेंसिटी सबुठु अधिका सी होछि बिहार। बा मु आपन को टास्क दोछि। चलंतु मु कहूनी मु आपन को टास्क दे दोछि। एमिति ही गोटे बॉक्स कर देबे। स्टेट रे कहार पॉपुलेशन सबुठु अधिक अछि, कहार पॉपुलेशन सबुठु कम अछि। बुझि पारले। यूटीज रे आमे कोन देखले सबुठु अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली रे। ठीक से परे कहि दोछि सबुठु लीस्ट पॉपुलेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक अछि। स्टेट रे को स्टेट रे सबुठु अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी, सबुठु लो पॉपुलेशन डेंसिटी सेडा आपण बाहर करिके मते कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणेबे। कारण आपण मानकर मेसेज बहुत कम आछि। आई एम श्योर डे बाय डे क्लास करिबा परे आपण माननको क्लास इंटरेस्टिंग भी लागिबो एवं रेगुलरली क्लास भी करिवे। सी मु बिल्कुल भी आपण मानको पढौनी। बुझि पारले। कारण आपण माने ऑलरेडी पढ़ी सारी चंती। आ सब 10-20 दिन अछि एग्जाम को। आपण माने पढ़ी सारी चंती। ए सब क्वेश्चंस केवल आपणकर प्रैक्टिस पई। जदि आपनको ए सब आसुछि भी ताहाले भी भला आपणकर गोटे रिवीजन हे गला। बुझि पारले। नेक्स्ट चलंतु ए राइट आंसर कोन हेबो ऑप्शन गोटे मिनिट। ऑप्शन बी दिल्ली। 21 as per 2021 census, which of the following state has the least density of population? Least density population देखंतु क्वेश्चन आपन को टास्क कोन देली। क्वेश्चन तो पळे आसला जे 2001 रो सेंसस अनुसार। रिमेंबर 2001 मु 2011 अनुसार कहिनी। जो चार्ट आपन को प्रीवियस देखैतली आपन सेमते दीटा चार्ट करिवे। अकॉर्डिंग टू 2001 रो गोटे, अकॉर्डिंग टू 2011 पई गोटे। ठीक अछि। चलंतु तो 2001 रो सेंसस अनुसार सब स्टेट जहार की लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी सी होची ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। जेहेतु फैक्चुअल डाटा सीधा सड़क आंसर कहितली। 22 कंट्रीज दैट हैव हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। इंडिया रो अपेक्षा आउ एमिति को कंट्री अच्छी जार पॉपुलेशन डेंसिटी अधिका। भाबी नियंतु गोटे किलोमीटर इंडिया रो गोटे किलोमीटर रे 5000 बा 5 लाख बा 5000 भाबो बेसी बढ़ेबानी हमर कम से कम काल्पनिक दुनिया रे हम इंडिया रो पॉपुलेशन गुडी के कम करि परिबा।
5000 तो चाइना यूएसए ब्रिटेन बांग्लादेश एमानक भितरु एमिति को कंट्री अच्छी जार कि 5000 अधिक डेनसीटी हम सी चाइना ର पॉपुलेशन इंडिया ठू अधिक बट चाइना ର कंट्री मध्य बड़ तार टेरिटरी बड़ तार एरिया बड़ तार लैंड जो तार टेरिटरी अच्छी तार एरिया अच्छी सेटा बड़ बुझिपारे तेणु एटी कह जाउछि कोटा से एमती को कंट्री अच्छी जार पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया रु मध्य अधिक सी होछि बांग्लादेश countries that have higher population density than India जदि पचारला आंसर कौन हेबो बांग्लादेश आहरी भी किछि अछंदी किंतु से भितरे बांग्लादेश सबुठु फर्स्ट रहउछि तेणु आपन को ऑप्शन रे बांग्लादेश ही देछि तो चाइना रो डेंसिटी इंडिया रो डेंसिटी टू कम यूएसए रो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया रो पॉपुलेशन टू कम पॉपुलेशन डेंसिटी रो ब्रिटेन रो पॉपुलेशन डेंसिटी मध्य इंडिया रो पॉपुलेशन डेंसिटी टू कम 23 द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया सबुठु अधिक पॉपुलर स्टेट टा कोन इंडिया रो पॉपुलर अर्थात पॉपुलेशन संख्या अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कथा कह जाउनी पॉपुलेशन डेंसिटी कथा कह जाउनी पॉपुलेशन कथा कह जाउछि आंसर हेबो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश देखंतु स्टेट रे आमे देखिले पॉपुलेशन अधिक होउछि उत्तर प्रदेश रे किंतु पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होउछि बिहार रे बुझि परले तार अर्थ जदी यूपी रे सबुठ अधिक लोक रहिले मध्य यूपी स्टेट टा बिहार स्टेट ठू बड़ तार एरिया टा बड़ तेणु यूपी रो जदी बा आमे कहि परिबा आमे स्टेट तो बड़ बोली कहिबानी उत्तर प्रदेश स्टेट बिहार ठू बड़ एमती तो आमे किछि स्टेटमेंट दबानी फॉर एहर अर्थ बुझंतु सबुठु अधिक लोक जनसंख्या जदी रहुचंती ताली यूपी रे होचंती अर्थात यूपी रो पॉपुलेशन अधिक माने जदी बिहार रे 5 लाख लोक रहुचंती जदी बिहार रे 5 लाख लोक रहुचंती ताहले यूपी रे 6 लाख रहि पारंती किंतु बिहार रो डेंसिटी अधिक अर्थात जदी जेहेतु यूपी रो स्टेट बड़ तथापि यूपी रो पर किलोमीटर रे 500 लोक रहिला बेले बिहार रो पर किलोमीटर रे 600 लोक रहुचंती बुझी पारले तेणु पॉपुलर स्टेट अर्थात इंडिया रो सही स्टेट जहार पॉपुलेशन सबुठु अधिका सी होछि उत्तर प्रदेश किंतु पॉपुलेशन डेंसिटी अधिका ताले सी हे जिवो बिहार क्लियर 24 व्हेन डिड द नेशनल पॉलिसी कम इनटू फोर्स इफेक्ट नेशनल पॉलिसी नेशनल को पॉलिसी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी व्हेन डिड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आमर होइतिला 2001 रे ठीक अछि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कोन हेतिला 2001 रे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लास्ट क्वेश्चन which one is not a tertiary activity banking तो tertiary activity रे जाउची ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी tertiary माने सर्विस सेक्टर रे जाउची एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी टर्शियरी एक्टिविटी जाउची बट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ता हमर कोन गला मैन्युफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्री ता माने ये हमर को सेक्टर हे जीवो प्राइमरी सेक्टर तेणु आंसर कोन हेबे से कोन पचाची व्हिच इज नॉट ए टर्शियरी एक्टिविटी तो आंसर हे जीवो ऑप्शन डी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क दिस इज इट फॉर टुडे थैंक यू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स मु आशा करुच्ची आज क्लास आपण मानक टिके इंटरेस्टिंग लगी कंपैरिजन टू अदर क्लासेस मोर अदर क्लासेस अपेक्षा आज क्लासेस टिके इंटरेस्टिंग लगी कारण आज आम 25टा क्वेश्चन सहित बहुत किछि डाटा मध्ये शेयर कले परस्पर सहित परस्पर तो कहि परिबिनी वन वे कम्युनिकेशन कारण आपण मानकर मेसेज मते किछि आसुनी ओके नो प्रॉब्लम मु किछि इंप्रूवमेंट करबा को आहुरी ट्राई करिवे कोन कले आपण मानक अधिक इंप्रूवमेंट लागि परिबो अधिक भल लागि परिबो कमेंट सेक्शन में मते निश्चय जणेबे मु से सब ऊपर ध्यान देबे थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स थैंक यू।